Happy Navratris to all of you first of all. Starts from tomorrow. And why eat that boring food for Navratris? And why eat that fried and spicy and heavy food too? So let's keep it healthy, simple, yet exotic and delicious. So without wasting too much time, I'm sure you all have my recipes with you. We are going to do the first one, which is sweet potato and pumpkin in coconut gravy. So now, Navratras, these recipes you can also do when you're not on a fast. So I'll give you options what you can do when you're not on a fast. Alright, so let's start with the gravy first. I'm going to use very healthy ingredients. Amla, pineapple in the curry. I'm sure you've never heard of these things in a gravy. So let's start with some oil. About 2 tablespoons of oil in a pan. And once the oil is hot, I'm going to add a little jeera. You can't use too many spices in this, so we have to rely on ginger, no garlic, only green chilies. But when you're not on a fast, you can add garlic also. So let the oil just get hot and I'll add a little jeera to it. Let the jeera sizzle a little. Okay, this is how I've cut the amla. This is Indian gooseberry and I've just removed the pit or the seed and chopped it finely. This I'm going to use. I've used fresh pineapple in this to give that khatta meetha taste. If you don't get fresh pineapple, you can always use some anar, fresh anar. A little fruity taste. Tastes nice. So this is 2 slices of pineapple chopped like this. My jeera is done, so I'll proceed further. I have some chopped ginger with me, a little green chilies. When you're cooking, you have to keep your eyes as well as your nose open, because when the ginger starts turning fragrant, then you should add the next ingredient, because unless it turns fragrant and you immediately add before it turns fragrant, wo ginger ka maza nahi aata. So now I can smell the ginger and I add the coriander. Now as you can see, sometimes we discard these stalks, but it's the stalks of the coriander or hara dhania which is most flavorful. So don't discard these stalks. Another thing is, in summers, hara dhania, coriander becomes a little problem. Sometimes you don't get it, sometimes you fall short of it. So how to, save it, keep it properly is, you should just chop it and keep it without, just a minute. You should chop it and keep it without washing, and when you want to use it, you wash it, because if you wash it and chop it and keep it, it becomes mushy, kharab ho jata hai. So I've added the coriander and I'm going to add the pineapple to it. And as I told you, if you don't have pineapple, you can always add some fresh anar, and if you don't have either of the two, you can omit it. This just gives body. See, we are not using onions, we are not using tomatoes. So to give body to the curry or the gravy, I'm using these things, which are healthy also. And I'm adding the amla also. Just saute this for a while. You don't need to saute it too much, just for a while. And now we add some spices. I am adding jeera powder, and we have our own blend of spices. This is the jeera powder that I am adding, Nita Mehta jeera powder. And I am also going to add Nita Mehta black pepper powder and Dalchini powder, Nita Mehta Dalchini powder. We can't use too many spices, and this is what works in this recipe.
Sendha Namak or rock salt for fasting, a little black pepper powder and a little Dalchini powder. Now whenever you add spices, if by chance your heat is a little extra, don't let them burn. Just add a little water. You know, the spices shouldn't burn, because if they burn, फिर उसका फ्लेवर खत्म हो जाता है. तो स्पाइसेस को ज़्यादा कुक ना करें. और अब हम डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क, थिक कोकोनट मिल्क. और इसको अब हम थोड़ी देर सिमर करेंगे फॉर ऑल द फ्लेवर्स टू blend. And when you simmer it, it's always a good idea to cover it. So I'm going to cover it and keep it for a while to simmer. Now this is the curry, which is very fast and very healthy also. Now what is the vegetable? As I told you, pumpkin and sweet potato. So this is pumpkin. All you have to do is, you know, I've taken out these beautiful balls. You know, these balls, all you have to do is take a melon baller and you can take out a ball like this. See, this is how you take out balls. When you're doing a salad, you can use this for watermelon balls. When you're not on a fast, you can do anything with it. You know, watermelon you can eat even these days when you're on a fast. So watermelon balls and watermelon and feta salad, this, you know, you can take out your watermelon like this. Now, this is sweet potato. If any of you don't know what sweet potato is, I have one here with me. And ये sweet potato है या शक्करकंदी है. इसको छील के मैंने डाइस कर लिया है. Now if you can see, these vegetables have been boiled. That's why I can break them. Now when you boil these vegetables, you need to boil them in salted water. Now what are the other things which you can use? Let me just give this a quick stir. Okay. Now what are the other things that you can use is in this curry? Paneer is something which comes, you know, just automatically when we think of any curry. तो वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर यूज़ कर सकते हो. पनीर को बॉईल नहीं करोगे ऑफ कोर्स. दिस इज़ बॉइल्ड. पनीर को सिर्फ आप सॉटे करोगे जैसे हम इसको सॉटे करेंगे. फिर आप इसमें व्रत के दिनों में कच्चे केले यूज़ कर सकते हो. तो कच्चे केलों को कैसे यूज़ करोगे? कच्चे केलों को बिना उबाले नहीं यूज़ करोगे. यू कैन जस्ट बॉईल देम with the peel in a pressure cooker with a little water and give 2 whistles. Then peel it, slice it, and this is the way you get them boiled. Then you can also use alus, of course, boiled alus. So these are the things. But when not in a fast, go with mushrooms, corn, broccoli. Anything would taste nice in this curry. It's healthy because it has amla and it has pineapple also. Okay. So now we are done with this. It's been simmering for a while. I'll remove it, and this is how it looks. Now what we need to do is cool it, remove it from fire first. This is what it looks like, but we can't use it like this. We need to cool it, blend it to a paste, a smooth paste, you know, like our curries. और इसको आप पीसते समय थोड़ा सा पानी डालकर इसे आप पीस लें और ठंडा करके पानी डाल के इसे बिल्कुल स्मूथ पीस लें. अगर आपने पाइनएप्पल्स की जगह अनार यूज़ किया होता तो पीस कर आपको छानना भी पड़ता क्योंकि उसके अंदर बीज आ जाते. सो जस्ट सी दैट यू हैव इट बिल्कुल एब्सोल्युटली स्मूथ. नाउ अ करी इज हाफ डन. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द वेजिटेबल. नाउ तेल ले लो, घी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट लेट मी यूज घी फॉर दिस. सो वी कैन यूज घी फॉर दिस. Okay. So I have 2 tablespoons of ghee into a pan, into a clean pan, and I'm going to add some jeera to it. You know, whenever you add jeera,
your oil or your fat, medium, whatever it is, should be very hot, because if it's hot, it burns and it has a very bitter flavor. Either, and it should not be cold either, because if it's cold, it's not going to, the flavor is not going to be released. So just feel the temperature of the oil before you add your this jeera to it. So I'm just waiting for it. Okay, this seems all right to me now. I can just add the jeera, and it's sizzling. I can see it sizzling. Once the jeera turns fragrant, I'm going to add my boiled pumpkin and my boiled sweet potato. Now how do you boil this? Just take some water with some salt, Sendha Namak in it, and boil it in salted water. You can either make it into balls or you can cut it into dices or any triangle, any shape. So the lighter color is the sweet potato and this is the yellow pumpkin. Okay. My jeera is done and I'm going to add the veggies. I've added salt to it while boiling, but just a wee bit more. तो अगर आप पनीर यूज कर रहे होते तो ऐसे ही बस जीरा और घी में पनीर को सॉटे कर लेते। अगर आप कच्चे केले यूज कर रहे होते तो कच्चे केलों को छिलकों के साथ प्रेशर कुकर में उबालकर स्लाइस करके, छीलकर स्लाइस करके और फिर आप उसको सॉटे कर लेते। कच्चे केलों के कोफ्ते भी बन जाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी चीज़ के आलू के कोफ्ते बनाते हैं, उसी तरह कच्चे केले के भी कोफ्ते बन जाते हैं। एंड फॉर बाइंडिंग इन व्रत का खाना, इन नवरात्रि, यू कैन ऑलवेज यूज अरारूट। अरारूट खाया जाता है नवरात्रों में। तो 2-3 मिनट हमने इसको सॉटे कर लिया नमक के साथ। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइल में सर्व करना है तो 2-3 पीसेस मैं इसके निकाल लेती हूँ। इनको मैं टूथपिक पे डाल दूंगी। बस ये 2 निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब जब तक ये सौते होते हैं, ये जो है इसको क्या करना है, हमने जो ग्रेवी बनाई थी ठंडा करके पीस लेना है। तो ये मेरे पास एक पिसी हुई पड़ी हुई है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये देखिए, दिस इज, आई हैव प्री डन दिस। ये वही है, पाइनएप्पल, आंवला, हरी मिर्च, अदरक, जीरे की जो ग्रेवी बनाई थी, सिर्फ पीस ली है। और थोड़ा सा हरा रंग आया है। क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द कोरिएंडर दैट वी एडेड। So now this is a smooth paste and I'm adding this. चलो, अब ये भी हमारा हो गया। अब कितना गाढ़ा आपने रखना है उस हिसाब से आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। कितना पानी आपने डाला है पीसते समय उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे तो खास पानी की ज़रूरत नहीं लग रही, पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी इस समय डाल दीजिए। नाउ यू हैव टू सिमर दिस। इट्स नॉट अबाउट दिस करी। चाहे आप राजमा बना रहे हो, छोले बना रहे हो, आलू मटर बना रहे हो, मटर पनीर बना रहे हो, वेन नॉट ऑन अ फास्ट, कोई भी चीज़ में जब आप सारी चीज़ें डाल देते हो तो उसको सिमर करना बहुत ज़रूरी है। Unless you simmer it for 5 minutes, वो मज़ा नहीं आता। तो हमेशा सब चीज़ें डालने के बाद उसे सिमर कर दो। अच्छा, अब इसको मैंने क्यों निकाला था? इसको इसलिए निकाला था कि मैं इसको टूथपिक पे डाल दूंगी। थोड़ा सा स्टाइल से नवरात्रे एंजॉय करो। ओके, सो आई हैव दिस pumpkin ball and I have a sweet potato dice. So I have this here with me. Okay. ये भी हमारा हो गया। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट डन है। 5 मिनट इसको आप 5 मिनट आप इसको उबाल लो। मैं 2-3 मिनट उबाल रही हूँ, आप 5 मिनट इसको
सिमर कर लो। इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, बिकॉज वो फिर थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है। नाउ बिफोर आई रिमूव इट फ्रॉम फायर, आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इफ इट नीड्स एनी स्पाइस। देखो ग्रेवी में अलग सॉल्ट डाला था, सब्जियां जब सॉटे करी थी उसमें भी सॉल्ट डाल दिया था। बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा है पाइनएप्पल और आंवले का। पर थोड़ा सा थोड़े सीजनिंग्स और डाल देती हूँ। हल्का सा मैंने सेंधा नमक डाल दिया, हल्का सा मैंने नीता मेहता जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नीता मेहता दालचीनी पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी काली मिर्च। यू शुड ऑलवेज गो ईजी ऑन द स्पाइसेस इन द बिगनिंग एंड ऐड देम टुवर्ड्स द एंड। वैसे भी फ्लेवर ज़रा ज़्यादा आता है टुवर्ड्स द एंड। सो दिस इज डन। अब आप घर में बनाओ और टेस्ट करो। कल से नवरात्रे शुरू है। ओके, सो नाउ दिस इज डन। I'll keep this aside. Now what do you serve it with? Some samak rice. So let's do the samak rice now. You know, these samak ke chawal, kuttu ka aata, they are very healthy things because इनमें ना relatively जो rice और wheat है इससे ज़्यादा प्रोटीन होता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सामक के चावल और कुट्टू का आटा सारा साल मिलते नहीं है। बट आई फील दे आर मच लाइटर एंड मोर न्यूट्रिटिव। सो व्हाट आई डू इज ड्यूरिंग द फास्ट्स आई जस्ट बाय अ लिटिल एक्स्ट्रा। लाइक आई वांटेड दीज थिंग्स 4 days in advance, बट माई ग्रोसरी स्टोर सेड कि नहीं मिलेगा, अभी 2 दिन बाद आएगा। So what I do is I just buy them in advance. I just buy them a little extra and put them in the fridge. They keep lying in the fridge, खराब नहीं होते। तो जब तक अगली नवरात्रि नहीं आती, जब तक बीच बीच में कभी कभी खाते रहो, because they are healthier than the other rice. Okay, now let's do samak ke rice. Samak rice is also called barnyard millet. It's kind of a millet. And जो ये चावल है इसको हम बनाते हैं घी में। I'm going to put a little ghee in my कढ़ाई। चावल कढ़ाई में, चाहे आप पुलाव भी बना रहे हो कढ़ाई में बनाओ, बट विद अ टाइट फिटिंग लिड, बहुत अच्छे बनते हैं इंस्टेड ऑफ अ पतीला। कढ़ाई वर्क्स बेटर। ओके, नाउ व्हेन यू आर मेकिंग अ रेगुलर पुलाव ऑल्सो वी ऑलवेज ऐड खड़े मसाले। Like I have a cinnamon stick, 2-3 long, 2-3 green cardamoms, and I have a little jeera. What do I add first, jeera or this? Always remember, jeera काला हो जाएगा क्योंकि इसके साथ तो इसकी खुशबू निकलेगी नहीं और जीरा काला हो जाएगा। So it's always a good idea to add the whole spices first, and once they turn fragrant, then add the jeera. बस खुशबू आने लगी है इसकी, घी की भी आ रही है और इसकी भी आ रही है, दालचीनी की, लौंग की और छोटी इलायची की। The green cardamom, cinnamon and cloves, they are turning fragrant in oil, and now I'm going to add the jeera. Because see, jeera I can't cook for too long. जीरा बस रंग बदलेगा, then I'm going to add ginger. You can add either grated, julienne, chopped, whatever way you feel like. And जरा सा जिंजर ने खुशबू दी तो हम डालेंगे हरी मिर्ची। अच्छा, ये तो हो गया हमारे सारे जो मसाले हैं। नाउ चावल को क्या करना होता है? चावल को 10 मिनट भिगोना है, और अगर आपके चावल 10 मिनट, आधा घंटा हो गया है, बहुत देर हो गई या आधा पौना घंटा हो गया और आप बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे छन्नी में भी आप डाल सकते हैं ऐसे। तो छन्नी में मैंने रखा हुआ है छान के भिगोकर, और अब ये अदरक सब चीज़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और मैं इसमें ये भीगे हुए चावल मैंने डाल दिए। चावल को 2-3 मिनट हम भून लेंगे। Chawal should always be soaked, but not over soaked, because when you over soak the rice, it turns mushy. So if you soaked it for about 20 minutes, 15 minutes, and you are not ready to cook as yet, strain it and leave it गीला रहने दो, but not
dipped in water. ये चावल को थोड़ी देर भून लिया हमने. अच्छा, रेगुलर राइस में आप डबल पानी डालते हो, बट इन दिस राइस इट टेक्स 1.5 टाइम्स वॉल्यूम. सो अगर 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी, 2 कप चावल है तो 3 कप पानी. 1.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो इसको थोड़ा सा भून लिया एंड दिस इज 1.5 टाइम्स वॉल्यूम द वाटर. ये हमने डाल दिया. ओके, अब इसमें हमने नमक नहीं डाला है तो हमने नमक डालना है. चावल में जब आप नमक डालते हो, कभी कभी बनाने के बाद फीके हो जाते हैं, चाहे वो सामक के हो या रेगुलर राइस हो. What do you do to get the right amount of salt in your rice? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नमक डालने के बाद it's a good idea to just taste the water. बिल्कुल ठीक है, मुझे तो अंदाज़ा है तो मैंने ठीक ही डाला था, पर अगर आपसे कम होता है तो आप थोड़ा सा, पर डोंट पुट टू मच इन द बिगनिंग, पहले थोड़े और फिर बाद में नमक चेक करके. नाउ आवर राइस इज गोइंग टू सिमर. इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू कुक दिस राइस. सो 5 मिनट हम इसको टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर देते हैं और इसको पहला उबाला आ जाए. जैसे हम चावल बनाते हैं, फर्स्ट बॉईल के बाद थोड़ा टेम्परेचर धीमा एंड लेट इट simmer for a while. So now while this is simmering, as we have less of time here, I've already prepared the rice so I could show you to serve it in style. So I have this rice which I've packed. आप नवरात्रि की थाली खाने जाते हो तो बड़े स्टाइल से सब चीज़ें लगी होती हैं, तो हम भी थोड़ा इसको ये क्ले पॉट में सर्व करते हैं. So what you can do is you can pack your cooked rice. This I've done, this is the same. I did it in the morning. Now this is a greased, you can take a bowl or any box or anything, whatever you have. And let's put it on this. Invert your rice. Now once you packed it in this, remember to microwave it before serving. You don't want to serve cold rice, so heat it a little before you serve it. So our rice is there. Now I hope you remember these beautiful sticks that we made, so we can put these sticks here. The pumpkin, I'm going to serve the curry in this. If you like, you can put a green chili, and we have our curry with us, which we'll serve on the sides. See how nice it looks. This pan is a bit heavy, but I would recommend you all to stop using other pans, aluminium pans and all. These steel pans are very good, but the only thing is people say steel चिपकता है. You know, steel को जब आप pan steels के use करते हो तो आपको पहले उसे गर्म कर लेना चाहिए before you add the oil to it. And another thing which is going to add some color is a little anar के दाने on top. And this is our, so this is what it is. Okay, now we are done with this and we'll do the galette. On my site nitamehta.com or cookflix.in, we have these products also in which I put these clay pots for sale, but Delhi NCR, because they can't be, it's difficult to transport them. And all the best ingredients, the best brands of the ingredients which I like, my choice. So it's there. Do look up nitamehta.com or cookflix.in for all these things. For more videos, if you like my way of teaching, you can pick up some videos from my site too. Okay, now let me tell you about the galette. The rice is done, almost done. Let me just have a look. When you put something on fire, just don't forget about it. See, there's no water. It's done. We women, why women, men too, need to be doing multitasking is important. When you're doing this, idhar bhi dhyan, udhar bhi dhyan. See how nice the chawal is. Just soak it up
This thing has, it's a fork kind of a spoon. So just fork it up and don't open it. Just leave it for another 5 minutes before it's done. And this rice is done. Okay. Now, this is the gallet or चीला. अब इसको गैलेट क्या होता है और चीला और गैलेट में क्या फ़र्क है, मैं ज़रा साथ साथ ऑन कर देती हूँ. Gallet is just a pancake or crepes which the filling shows. There are meetha ones also and there are savory ones also. In sweet ones, if you are on a fast, then you can fill some apple pie वाली filling. जैसे apples को grate करके थोड़ा सा arrowroot, no cornflour, arrowroot में उसको थोड़ा सा thicken करके sugar and arrowroot and a little cinnamon के साथ उसको आप flavor करके और बना सकते हो filling. सेवरी बनानी है when not on a fast, आप mushrooms, corns, broccoli, zucchini कुछ भी डालो. When on a fast, you don't have much choice, so I'm using those baby potatoes which have been sliced and then boiled in water till they are kind of crisp tender. So this is the aloo which is nice but not mushy. So these are the baby potatoes which I have, which have been boiled in salted water. If I was not on a fast, I would have added a little haldi to it while boiling. Oh, by the way, I forgot. We have Nita Mehta haldi powder. We have Nita Mehta chili powder. They are all very pure. Do try them. And we have dhania powder also. And of course, many of our spice blends are also there. Like we have these premium packing of chana masala, biryani masala, shahi paneer, many others. You can just look up nitamehta.com for these things, and you get them in a bottle packing which retains its flavor for a long time. Okay, our pan is hot. Without wasting too much time, let's start with the filling first. I'm going to do it in ghee. You can do it in oil or in ghee. Okay. Now for the filling, just add a little jeera. We have the same ingredients because Navratra में ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते. थोड़ी सी अदरक. Then we have some green chillies. Just give it a quick stir, and in goes our potatoes which have been sliced and then boiled. Remember, don't boil them and slice them. There's a lot of difference in the texture if you boil a whole potato and slice it, or if you just slice it first and boil it in salted water, खुला. तो वो थोड़ा वैक्सी हो जाते हैं आलू. अगर आप उनको उबाल के काटते हो तो वो टिक्की विक्की के लिए ठीक है, पर सॉटे करने के लिए चाहे वो छोटा आलू हो या बड़ा आलू हो, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप आलू को पहले ही स्लाइस कर लो, बड़ा छोटा जो भी है, स्लाइस करके उबलते पानी में, नमक वाले पानी में 3-4 मिनट क्रिस्प टेंडर होने तक उबाल लो. तो चलिए हमारे, यू गेट दी स्टील पैन्स ऑल्सो ऑन आवर साइट. Of course, we have our masalas, our books, and now we've come out with seasonings also. Achar. Yes, it's a one-stop kitchen solution now. And you get our videos also there. The classes, online classes which I've done, they're all recorded classes, but they look as if I'm talking to you and taking a class with you. It's so lively, the whole thing. Okay. Now the alus are done. I've boiled them in salted water, but let me just add a little more salt, Sendha Namak. And I'm adding Nita Mehta black pepper powder. Okay. And some hara dhania or coriander. I love sorting my paneer like this and having it as a snack. थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो, बड़ी अच्छी शक्ल हो जाती है.
चलिए हमारे आलू भी तैयार हो गए. So our alus are also done. Oh yes, another thing which you could add is a little bit of lemon juice. It gives a nice taste. Now let's keep them aside. And we do our pancake or crepes or chilla, whatever you call it. Now, I've already made the chilla batter or the galette batter. Now, because why? You can't make it and use it. It has to be rested for 30 minutes. 30 minutes or longer. Like I made it 2-3 hours in advance. I made it around 2:30. It's 5 now. So you could make, but you can't make it and use it. So this is, now see the consistency. Is it coating your spoon? Yes. It has to coat your spoon, so it should be thick enough to coat your spoon. Is it pouring? Very easily. It should be a thick pouring, but a very comfortable pouring consistency. You can always make your first one and see if you find it thick, you can add a little more water. Now what is important in this? First is resting. Second is the amount of the little bit of milk and a little oil that goes into it. So in this recipe, we have 1 cup of kuttu ka atta or buckwheat flour, which is really healthy. And when you are not on fasting, you can make it with regular atta or with maida. 1 cup of atta or maida or buckwheat flour in this case to 1 cup of water, 1/4 cup of milk, 1 tablespoon oil, a little bit of salt and pepper. That's what it is. It's just the milk and oil which has been added besides the water and of course seasonings. But the consistency has to be right. And the pan has to be nicely heated before we start. Okay. Now, it's nice and hot. How do we know it's nice and hot? Just, it's sizzling, so it's nice and hot. Now, before you start, just check with water, then brush some oil. Now, if you put your batter on this oiled pan, what is going to happen? Your batter is not going to spread. You need to wipe off this oil. And the important thing is, you need to pick it up from heat. It should not be on heat. And now, the batter should be thin enough to spread on its own. So here we go. Now, once this is done, I'm going to turn it. But now this takes a little time, so I have some ready with me, which I'll show you. You know, instead of the rotis, I like to eat this with my curry. If I don't want to eat samak ke chawal, with the coconut sweet potato and pumpkin in coconut curry के साथ भी, मतलब रोटी की जगह आप ये चीले भी खा सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं. Because roti gets a little hard. When you're doing a roti, you have to mix a little aloo in it. But because of the milk and the oil in this batter, the chilas are very nice. Okay. Now, this looks done. So what you need to do is just brush it with oil. And then, अच्छा, अगर कच्चे को पलटने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा. तो थोड़ा सा हम रुकते हैं. चलो, जब तक हम रुक रहे हैं, आपको एक चीज़ और बता देते हैं. ये मैंने एक चटनी बना के रखी है. ये किस चीज़ की चटनी है? दिस इज़ लाल वाली मूंगफली जो छिलके वाली होती है. तो छिलके वाली मूंगफली के साथ थोड़े से तिल, like about half a cup of red peanuts, but you need to roast them, कच्चे नहीं.
2 चम्मच सफ़ेद तिल और वाइट सेसमी रोस्टेड विथ दही। अब सिर्फ 2 चम्मच दही से तो नहीं पिसेगा, पानी भी डालना पड़ेगा। और फ्लेवर के लिए हमारी वही स्टेपल चीज़ें जो नवरात्रों में हम खाते, जीरा, अदरक और हरी मिर्च के साथ इसे आपने पीस लिया है। और नमक, काली मिर्च तो पड़ेगा ही। चलिए, अब तक ये एक साइड हो गई होगी। अब चलिए पलट लेते हैं इसे। ये पलट गया। सो नाउ व्हाट डू यू डू फॉर अ गैलेट? अब ये जब पलट लिया आपने, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी ये चटनी। अगर आपके पास चटनी का टाइम नहीं है तो वो जो कोकोनट करी बनाई थी ना गाढ़ी गाढ़ी, वो लगा सकते हो आप, वो भी लगा सकते हो। कुछ जैसे हम रैप्स में थोड़ा सा स्प्रेड लगाते हैं उसी तरह से। यू जस्ट नीड सम, अदरवाइज इट टेस्ट वेरी ड्राई, यू नीड अ लिटिल समथिंग मॉइस्ट। तो हमने थोड़ी सी ये चटनी डाल दी। और ये चटनी आप कच्चे केलों के कोफ्ते के साथ, आलू के चिप्स के साथ, किसी के साथ भी। और वाइट चटनी, इसको आप अगर पानी डालोगे और इसमें या कोकोनट मिल्क डालोगे तो इसकी करी भी बना सकते हो आप। तो इट विल बी जैसे थाई में पीनट सॉस भी होती है और पीनट करी भी होती है, तो इसमें भी आप अगर कोकोनट मिल्क डाल दोगे तो आपकी पीनट सॉस सी हो जाएगी और करी बन जाएगी। ओके, नाउ दिस इज डन। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर। ग्रेट कर दिया मैंने थोड़ा सा पनीर। पनीर के ऊपर मैं डालूंगी अपनी फिलिंग। आप लोग की रेसिपी में वाटर चेस्टनट्स लिखे होंगे। अब है क्या, जब नवरात्रे आपके आते हैं विंटर में, देन यू गेट दोस फ्रेश वाटर चेस्टनट्स, पर आजकल नहीं मिल रहे हैं फ्रेश वाटर चेस्टनट्स, तो मैंने आलू यूज़ किए। पर आप जो टिन वाले हैं वो भी नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वो ब्राइन में होते हैं। सो व्हेन नॉट ऑन अ फास्ट यू कैन यूज दोज टिन्ड वंस। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आप मीठी फिलिंग भी डाल सकते हैं। तो मीठी फिलिंग में क्या करेंगे, आप इसमें एप्पल्स को, जैसे आप बनाते हो ना अपना एप्पल पाई, उसी तरह से एप्पल की फिलिंग। कई बार लोग ब्लूबेरी फिलिंग डाल देते हैं। एनी फ्रूट स्टूड यू कैन जस्ट, सो लेट्स लीव इट लाइक दिस। इफ इट वाज अ बिगर वन you could just do it on all 4 sides, but this is also good. So now we are done with the class. If you have any questions, you can ask me. So this is what your galette looks like, and if you want you can just serve a little extra dip with it on the side.